सो हे गाइस, वेलकम टू कुकिंग विद साइशा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन पॉपकॉर्न। तो चलो शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन क्यूब्स, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून कर्ड विच इज़ दही, सॉल्ट एज पर टेस्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 pinch धनिया पाउडर, 2 tablespoon of favorite Ching's Chinese 65 masala, 2 tablespoon besan, 1 teaspoon lemon juice. After marinade, take 1 tablespoon besan, 1 teaspoon rice flour. For garnishing, take green chutney, lemon juice, which is optional. Let's start. Add chicken cubes in a bowl, then green chutney, curd, which is dahi, then salt, red chili powder, dhania powder, chicken masala. Mix them very properly. Then besan and lemon juice. Mix it also. Marinate for 20 minutes. Now add besan and rice flour. Now mix them properly. And now fry them. Fry them on low flame. We are adding rice flour so it gets crunchy. Fry it nicely. Now enjoy. It was so delicious. Please like, comment, share, subscribe, and thanks for watching. Bye bye.